Hello and welcome back to another session being brought up by Crop Course. So another session unfolds here for your upcoming NABARD exam. So today is session 8 and we'll see our topics with continuation to our last class. So we were basically studying the topic of irrigation. So with continuation to that, we were discussing about types of irrigation. So today we'll continue with this topic, and after that we will be seeing the subsequent topics. So today the types will come to an end, and today our discussion, I would just like to give you some basic idea. We'll see the important facts, one liners, which are very important for your exam. Second of all, we'll see the objective questions which were being asked and which are having the higher probability to be asked. Okay, now before proceeding, there are some few basic terminologies that is indispensable. Like if I don't say this, it's not like giving proper justice. So some of the basic terminologies are there that will not be asked, but you may get one-liner question with 4 options. So just we'll take a look into the definition only, nothing beyond that or in depth. So first is PALCO. So PALCO means it is the first irrigation that is applied before the sowing. Okay, so this you remember, this is the first water application before the sowing. So this is one condition. Okay, so basically we know water or irrigation is basically applied for seed germination, because without moisture seed cannot germinate. Okay, except in some extreme conditions like in extreme xerophytic or arid conditions, that is different. But for our crop cultivation point of view, we need moisture for seed germination. Okay, so that is the application prior to your sowing of crop. Okay, बुआई से पहले. Second we have is core. So this is also the first watering, okay, in your field, and the depth of that water is known as core water or core depth. Okay, so here it's not mentioned that will be your prior to sowing or after sowing or during your basic tillage operations. Okay, it's not mentioned here. Okay, next we have is delta. So delta means, you try to remember D with D. Delta means depth. Okay, delta stands for depth, like that you remember. So it is the total depth of water. Depth of water means it is present in the soil profile in the various horizons. Okay, mainly in the upper horizons A and B in centimeter, that is required by a crop during its duration. Duration means starting from germination to harvesting till the entire period. Okay, you can focus on the base period of a crop. Okay, means the entire period where it needs irrigation. So this is that depth of water that is defined by delta. Next is seepage. Seepage is a loss. Okay, it is a process by which water is lost. Okay, it is the horizontal flow, means it will just flow throughout the surface. Okay, and from channels, fields. Next is we have infiltration. So infiltration and percolation, okay, both are somehow like almost same, but still there is a difference. So this is being asked, okay, in multiple exams. So infiltration means it is your water entry from upper layer, or you can say upper horizon, to the lower horizon. Okay, but in case of infiltration, that will basically take place in case of unsaturated soil. Okay, it will take place in case of unsaturated soil. Okay, means just imagine here you have various pore spaces. Okay, you have various pore spaces, but your pore spaces, these are not occupied by water or moisture, these are vacant. So here infiltration will go. Okay, water will go deep down. Okay, water will go from upper layer to the lower layer, in between the occupying the vacant spaces or the pore spaces or the voids. Okay, it is unsaturated. Okay, now another term is percolation. So it is the same downward movement of water through saturated condition. Okay, so saturated condition means that your pore, you have these particles in the soil. So ये जो जितने भी gaps है, these are not vacant. Okay, these are occupied by moisture or molecules of water. Okay, so ये आपका completely packed है. But still then, if the water flows from upper layer to the below layer, then we call it as percolation. Okay, so that will take place in saturated condition, and infiltration will take place in
unsaturated condition. So this is the primary difference between the both. Last one is leaching. So leaching means with L, you try to remember, leaching is a loss. Loss of what? Loss of nutrients. How? When the water will be just flown away or the water will be flowing, it will also carry the nutrients. For example, I'll just give you an example. Just you consider NO3 minus. Okay, ये क्या है? This is your nitrate. Okay, so this is extremely prone to your leaching losses. Why? Because it is having negative charge. Okay, it is having negative charge. So clay is also having negative charge, so it will not be attracted, there will be repulsion. As a result, it is prone to leaching. Okay, so it is a loss from where nutrients are also being taken away from the root zone. Okay, next now we have is sources of irrigation. So this topic is not extremely important, but still you may get one or two questions. So basically we don't have multiple sources of irrigation. There are few limited sources of water or irrigation. Okay, so first one is tube well. Okay, from where the water is pumped out and being applied into the crop field, and in various states there are some different sources, but these are the common sources. Okay, first is tube well, then you have got canals, then you have wells. Okay, then you have tanks and others. Okay, so out of these five, the most pronounced one is your tube well. Okay, 45% is your tube well. Okay, next you have is canal, that is 26%. Okay, subsequently wells 19%, then tanks 3%, and others 7%. Okay, so I've just highlighted some basic pictures. Okay, you can just see this is a tank, this is your, ये कौन सा है, ये आपका कैनल है. Okay, and यहाँ पे आपका like ये by pump. Okay, by pumps, motor pumps से आपका ये underground होते हुए आपका this is your water is being discharged, or the water is collected, and this will be, ये भी यहाँ पे भी connection है आपका, यहाँ पे भी outlet होगा जहाँ से water आपके irrigation channels में that will be allowed to flow. ठीक है, so tube well में highest place is taken by UP, in case of well गुजरात, and in case of tank तमिलनाडु. ओके, आप यहाँ से क्या याद करना है, जो हाईएस्ट है एंड लोएस्ट है. सो आपका ट्यूब वेल इज हाईएस्ट. ठीक है, तो आप हाईएस्ट का वैल्यू हमेशा याद रखना, एंड लोएस्ट इज आपका टैंक, लोएस्ट का वैल्यू आप हमेशा याद रखना. ठीक है, सो दीज आर इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट इज योर क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट. Okay, so in case of crop water requirement means a particular crop, for example rice, starting from its transplanting to the complete harvesting process, how much water is being uptaken to complete up its metabolic activities and also to complete its physiological activities, that is known as crop water requirement in its entire cycle of crop duration. Okay, सो राइस के बारे में हम सबको पता है ऑलरेडी कि राइस को सबमर्जेंस चाहिए, इट नीड्स रिड्यूस्ड कंडीशन, ज़्यादा पानी चाहिए. सो हियर आई हैव मेंशन सम ऑफ द क्रॉप्स, राइस, व्हीट, मेज, सोरगम, ऑयल सीड्स एंड पल्सेस. जस्ट आपको एक बार वैल्यू देखना है. ठीक है, सो यू जस्ट रिमेंबर द वैल्यू. इन केस ऑफ राइस इट इज़ 1500 मिलीमीटर. ये यूनिट भी याद रखना, मिलीमीटर में है. अगर ऑप्शन में सेंटीमीटर दिया गया है देन यू जस्ट नीड टू कन्वर्ट इट. ऑलराइट, देन यू गॉट व्हीट. So in case of wheat, it is between 650 to 800. Maize 450 to 600. Sugarcane 1500 to 2500 millimeter. ठीक है, so value याद रखना. Okay, so sugarcane and rice, they both require maximum water. Oil seeds भी आपका 500 to 700. In oil seeds you have got groundnut, soybean, rapeseed, mustard. Okay, then some more sesame. ओके, तिल. देन पल्सेस में तो आपको सब पता ही है, जो दाल में जो ऑल द पल्सेस लाइक चिकपी, पिजन पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ऑल दिस थिंग्स, मूंग, ऑल दिस थिंग्स, राजमा, ऑल दे विल बी कमिंग अंडर पल्सेस. ओके, सो पल्सेस को ना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए. आप यहाँ पे देखो 450 से 700 है. ठीक है, पल्सेस को कभी ज़्यादा पानी नहीं चाहिए. क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स. ओके, दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, तो वो जल्दी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं एज कंपेयर टू सीरियल्स एंड अदर्स. ऑलराइट,
So this is from the crop water requirement. Just just set the values in mind, that's all. Next one, here we have irrigation water methods कि कौन से क्रॉप में कौन सा मेथड पूछा जा सकता है या एग्जाम में आ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पहले नाबार्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। यस, आई एम फोकसिंग अगेन, questions were being asked from this particular part in your NABARD exam and also from this particular part, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कंसेप्ट नहीं समझना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर योर एग्जाम, जस्ट न्यूमेरिकल डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा आपको याद करना है, ठीक है। ओके, पहला है राइस इरिगेशन मेथड। सो राइस में हम कौन सा, राइस तो कॉमन है, हम सबको पता है, फ्लडिंग, ठीक है। फ्लडिंग हम क्यों करेंगे, क्योंकि राइस को रिड्यूस्ड कंडीशन चाहिए। नेक्स्ट है आपका व्हीट। सो व्हीट नीड्स चेक बेसिन, जैसे मैंने कल आपको एक डायग्राम करके मैंने बताया था कि चेक बेसिन क्या होता है। सो चेक बेसिन वी नो, यहाँ पे यू विल बी हैविंग फरोज एंड यहाँ पे हम इसको बीच में से ब्रेक कर देंगे, चेक कर देंगे, विल अप्लाई चेक, सो दैट इज योर चेक बेसिन, ठीक है। ये है आपका चेक बेसिन, ओके। सो ये सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है राइस में। इन केस ऑफ मेज फरो, ओके, फरो मेथड भी आपको पता है। नेक्स्ट sorghum is also having the same furrow. Finger millet and pearl millet also furrow. Soybean and cotton also they are furrow, ठीक है। Last then we have pigeon pea, green and black gram. So that is check basin method, okay। याद रखना है आपको कि फरो जो है वो कॉमन है, जितने भी आपका सोलानेसियस क्रॉप्स है, then you have got oil seeds, सबसे ज़्यादा फरो यूज किया जाता है, ओके। देन शुगर केन में भी फरो है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुगर केन में सबसे ज़्यादा इरिगेशन कौन से स्टेज में लगता है, यू विल बी आंसरिंग फॉर्मेटिव स्टेज, ओके। द नेक्स्ट वी हैव इज योर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। सो बेसिकली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में भी फरो यूज किया जाता है, बट इन केस ऑफ साइट्रस ड्रिप, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन केस ऑफ मेज यू कैन ओनली गो फॉर फरो, अदर मेथड्स आर नॉट एप्लीकेबल, अदर मेथड्स आर ऑल्सो बीइंग टेस्टेड टू बी एप्लीकेबल, बट दिस मेथड्स दे आर आइडियल। एक वर्ड में आइडियल, IDEAL, दे आर ऑलमोस्ट आइडियल फॉर एप्लीकेशन मेथड, ठीक है। विल मूव ऑन फ्रॉम दिस पार्ट टू द नेक्स्ट वन, ओके। अभी नेक्स्ट वी हैव इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, एंड अभी वट एवर वी हैव बेसिकली डिस्कस्ड, वी विल जस्ट टेक ए लुक इन टू ऑल दिस एंड विल जस्ट ट्राई टू आंसर फ्रॉम आवर ओन साइड। एंड यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन सेटअप किया है, आई हैव पिक्ड अप क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट 3 ईयर नाबार्ड क्वेश्चंस। सो उसी पैटर्न में ये सीक्वेंस बनाया गया है। सो इट इज़ माय आउटमोस्ट रिक्वेस्ट टू यू, सो प्लीज़ बी अटेंटिव एंड जस्ट नोट इट डाउन, टेक ए पेन एंड पेंसिल, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत कुछ डिस्कस करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग सम मल्टीपल एडिशनल इन्फॉर्मेशंस बियॉन्ड दिस MCQs which I have highlighted, okay। फर्स्ट इज क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन ऑफ व्हीट। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आने का प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज जॉइंटिंग, देन यू हैव गॉट मिल्किंग, देन यू हैव गॉट क्राउन रूट इनिशिएशन, देन यू हैव डफ स्टेज, ओके। जितने भी सारे क्रॉप्स है, आपको एक सीक्वेंस में सभी क्रॉप्स का इरिगेशन स्टेज आपको याद कर लेना है, ठीक है। सो क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन ऑफ व्हीट इज नन अदर देन क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, ओके। सो और भी कुछ स्टेजेस होता है राइस में, जैसे मैंने मेंशन किया है, CRI होता है, फिर टिलरिंग होता है, फिर जॉइंटिंग होता है, देन यू हैव मिल्किंग, देन डफ स्टेज। डफ मीन्स व्हाट, डफ मतलब कि ये वो स्टेज है जहाँ पे ये जो आपका मिल्क है इट टर्न्स टू सॉलिड फॉर्म, ओके। डफ स्टेज मीन्स योर मिल्क टर्न्स टू सॉलिड फॉर्म, ओके। सो दिस इज योर डफ स्टेज, ये एकदम आखिरी स्टेज होता है, लास्ट वन इन केस ऑफ व्हीट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज फॉर शुगर केन। सो शुगर केन के लिए सबसे ज़्यादा पानी किस स्टेज में चाहिए, मीन्स मॉइस्चर सेंसिटिव, मीन्स कौन से फेज में इनको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, मैच्योरिटी, जर्मिनेशन, फॉर्मेटिव, ग्रैंड ग्रोथ। सो करेक्ट आंसर इज फॉर्मेटिव, ओके। इस स्टेज में शुगर केन को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए एंड इट मोस्ट प्रोबेबली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 60 डेज, ओके। 60 डेज आफ्टर सोइंग के बाद ये आपका जो स्टेज है ये स्टार्ट होता है इन केस ऑफ शुगर केन, फॉर्मेटिव स्टेज, ओके। थर्ड वन, बुटिंग इज द क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन ऑफ व्हिच क्रॉप, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुटिंग। सो राइस, जूट,
बोथ राइस एंड जूट, नन ऑफ द अबव। सो ये ऑप्शंस भी ऐसा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए आपको जानना है। सो करेक्ट आंसर इज राइस। सो राइस में बूटिंग, पैनिकल इनिशिएशन, ऑल दिस स्टेज होगा। तो आपको एक बार जानना है कि कौन से क्रॉप में कौन सा स्टेज है। विदाउट दैट यू कैन नॉट प्रिसाइसली मार्क आउट दिस क्वेश्चंस, एंड यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेसलिंग एंड सिल्किंग स्टेज इज ऑफ विच क्रॉप। ये तो बहुत कॉमन है, ये हम सबको पता है कि मेज एक ऐसा क्रॉप है कि जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर देयर, टेसलिंग एंड सिल्क बोथ आर देयर। तो टेसलिंग एंड सिल्क बोला गया है, मतलब जस्ट बीइंग कॉन्फिडेंट यू कैन मार्क means. Okay, next we have is critical stage of irrigation in case of barley. ठीक है, तो barley your correct answer will be flowering you have got tillering, you have got both, you have got none. So your correct answer is tillering. ठीक है, so यहाँ से questions put up होगा। This I am focusing again, I am repeating, यहाँ से आपको question put up होगा, आपको यहाँ पे you need to be extra attentive. ओके, नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन का एफिशिएंसी कितना है? 90%, 50%, 80%, 75%। ये क्वेश्चन आज के सेशन का नहीं है, लास्ट सेशन में जो मैंने पढ़ाया था। जो बच्चे यू आर गाइस आर कनेक्टेड, यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ ड्रिप इरिगेशन इज, ड्रिप इरिगेशन जो है वो है आपका सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट एफिशिएंट इरिगेशन मेथड इज, और इज योर सबसे हाईएस्ट है कौन सा आपका? ड्रिप। ओके, सो ऑब्वियसली वैल्यू हाईएस्ट होगा, मोर देन 90% होता है। ठीक है, मोर देन 90%। ओके, इट विल बी मोर देन 90%। मोस्ट ड्राउट टॉलरेंट अमोंग सीरियल्स, कौन सा क्रॉप है जो सीरियल्स के अंदर सबसे ज्यादा ड्राउट टॉलरेंट है? सो जो ड्राउट टॉलरेंट होगा उसको मॉइस्चर सबसे कम चाहिए होगा। ओके, so this is another important question. So your options are pearl millet, wheat, maize and sorghum. So your correct answer is pearl millet. ठीक है, so ऐसे आपको पढ़ना है। which crop has merit to withstand drought, means कौन सा क्रॉप है जो थोड़ा सा ड्राउट टॉलरेंट है। ओके, जैसे हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल पढ़े थे तब हम देखा कि कौन सा क्रॉप एसिड टॉलरेंट है, कौन सा क्रॉप सलाइन टॉलरेंट है, कौन सा क्रॉप एल्कालिन टॉलरेंट है। फॉर एग्जांपल राइस, दैट इज एसिड में वो रह सकता है, सलाइन में बार्ले, शुगर बीट वो रह सकते हैं। तो सिमिलर वे ड्राउट कंडीशंस में जहाँ पे कि पानी बहुत ज़्यादा कम है, लाइक इन केसेस ऑफ महाराष्ट्र जहाँ पे सडनली बहुत ड्राई हो जाता है, राजस्थान, इन ऐसे कंडीशन में व्हाट विल बी द क्रॉप विल बी देयर? सोरगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेजिटेबल हैज सेंसिटिव स्टेज फ्रॉम बल्ब फॉर्मेशन टू मैच्योरिटी। तो ये थोड़ा सा, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली हॉर्टिकल्चर पार्ट से है, बट इट इज रिलेटेड टू मॉइस्चर एंड इरिगेशन। बल्ब मतलब यू कैन अंडरस्टैंड जो आपका ऑनियन होता है। ओके, जो एडिबल पार्ट है उसको हम बल्ब बोलते हैं। ठीक है, ओके, जो ये वाला पार्ट होता है दैट इज योर बल्ब। ओके, आई जस्ट कुडंट फिगर आउट द एग्जैक्ट डायग्राम बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड वेल। ठीक है, सो दिस पार्ट इज योर ऑनियन। तो आंसर अनडाउटेडली आपका होगा ऑनियन। नेक्स्ट, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर शुगर केन। मैंने डिस्कस करते हुए टाइम बताया था कि शुगर केन एक ऐसा क्रॉप है जिसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। कौन सा स्टेज में चाहिए? उसको चाहिए फॉर्मेटिव स्टेज में। ठीक है, फॉर्मेटिव स्टेज कब से स्टार्ट होता है? 60 डेज से। सो योर करेक्ट आंसर इज 1500 to 2500। ऑलराइट, नेक्स्ट, मूविंग ऑन। नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन ऑफ कॉटन। कॉटन में सबसे क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन मीन्स कौन सा स्टेज में सबसे ज़्यादा पानी चाहिए? सेम। सो योर ऑप्शंस आर सीडलिंग, देन यू हैव गॉट बॉल फॉर्मेशन, फ्लावरिंग, नन ऑफ द अबव। सो योर करेक्ट आंसर इज फ्लावरिंग। ओके, तो ये सभी क्रॉप्स को ऑलमोस्ट मैंने जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आई हैव हाईलाइटेड। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। ऐसा नहीं कि जितने भी क्रॉप्स ऐसे तो करके 100 क्रॉप्स होगा, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री कंपाइल करके, तो ज़्यादा नहीं पढ़ना। जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आई हैव हाईलाइटेड यू जस्ट हैव टू नीड टू हिट ऑल दोज क्रॉप्स। नेक्स्ट इज क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन ऑफ ग्राउंडनट, पेगिंग, पॉट फिलिंग, सीडलिंग, बोथ एंड। सो ग्राउंडनट में हमेशा याद रखना कि जो पेगिंग स्टेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पेगिंग स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पेगिंग स्टेज जब इसमें पैग फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तब उसको सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है। ठीक है, इन केस ऑफ ग्राउंडनट। ओके,
Next we have is critical stage of irrigation of gram. Okay, your options are flowering, pod development, pre-flowering, none of the above. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है pre-flowering. ओके, which two crops needs maximum water. ठीक है, जो टेबल अभी हमने डिस्कस किया था वही से ये क्वेश्चन पुट अप किया गया है. सुगर केन एंड मेज, wheat and sugarcane, rice and wheat, rice and sugarcane. Okay, so yes, what will be the answer? I think जो लोग आप आंसर कर पा रहे हो, it's very good. So your correct answer will be rice and sugarcane. Okay, next is critical. Okay, not critical, it is your crown root initiation. तो ये जो CRI स्टेज है ना, ये एग्रीकल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बोल सकते हो कोई भी एग्जाम के लिए, और मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो ये वैल्यू आप याद कर लेना काइंडली. क्राउन रोड इनिशिएशन जो होता है वो विट में होता है. कितने दिन बाद होता है सोइंग के, बुआई के कितने दिन बाद ये स्टेज आता है.